Well, the opposition started outraging on this at 9 a.m. and by noon the issue was dead. Apple has issued a statement and they have very clearly said that this is a notification that they have sent out to users in 150 countries. It's something that is done in course of normal activity, and they are not able to point out the specific reason for it. Now, having said that, naturally the allegations that the opposition has made that this is government sponsored and that there is an attempt to snoop completely falls flat. We saw how the opposition raised similar issues at the time of Pegasus, which was nothing but a foreign agency sponsored story. Rahul Gandhi personally championed it. He made several statements, held press conferences, raised the issue in Parliament, but when the Supreme Court appointed committee asked him to submit his phone for investigation, he backed out. Similarly, now, if anybody is feeling aggrieved, even after Apple has issued a clarification, they should file an FIR, submit their phone for investigation, and speak to Apple on why this message was sent on their phone. Could it have something to do with their user behavior? I've spoken to several technology experts and they tell me that if you are susceptible to click on salacious links, then you are probably a more prominent target as far as such attacks are concerned. Therefore, I would suggest to the opposition that instead of getting all excited on issues that do not merit any attention, they should focus on more productive things. So, sir, do you think that is there any substance behind these allegations? Because some very senior opposition leaders are coming forward and they're pressing upon the fact and they're continuing with the attack. They first began with Mahua Mitra, then we have Rahul Gandhi, and now the spokespersons are also coming forward and they want to press upon the fact that yes, there's an serious fact behind that there's something really happening. Do you find any weight behind it? Well, because the opposition does not have a substantive issue to corner the government with, and therefore they are going to use these issues. I won't be surprised that they will continue to talk about it till they can manage to get another issue. And for somebody like Rahul Gandhi, who's supposedly their prime minister in waiting, if he comes out and makes a statement, and that too at a press conference, and it gets negated in exactly 5 minutes, you know the seriousness of the things that he says. I don't know about those self-generated and manipulated warnings or precautions or whatever informations they have received. I can say only one thing. Anybody who has not acted against the interests of the nation should not fear about anything. Government of India is very clear that freedom of expression, privacy, and all civil liberties must be respected and also protected. That's why those people who are doing illegal acts, working against the interests of the country, they will be complaining about all this thing. We are very clear, we are not like Congress party and other people who will do illegal acts. We follow the rules and we are totally governed by the constitutional provisions of our country. Earlier, opposition leaders attacked the government and alleged hacking bid by the centre. This even as Apple issued a clarification saying that Apple does not attribute those threat notifications to any specific state-sponsored attacker. Listen in to what followed. जिस तरीके से रात को मुझे ये वार्निंग आई है, मैं 15-20 साल से एप्पल यूज़र रही हूँ, कभी इस तरीके की वार्निंग नहीं आई है. तो एक सीरियस वार्निंग थी जहाँ पे वो डूज एंड डोंट्स भी बता रहे थे हमें कि क्या हमें करना चाहिए टू सेफगार्ड हमारे जो भी डेटा है. तो दिखाता है किस तरह, और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है. ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं. हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए. और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के एमपीज़ हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, पेगासस का किस्सा हो चुका, उसको खारिज करने की पूरी कोशिश की गई, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं हुई. अदानी के भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, उनके बचाव के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं. सब जानते हैं कि ऑपोजिशन में कौन वोकल वॉइसेस हैं और ऑपोजिशन के ही एमपीज़ को ये मैसेज आ रहे हैं. तो यानी ये लार्ज स्केल सर्वेलेंस हो रहा है जो स्टेट प्रायोजित है. तो मैं बस यही कहूँगी कि इस पर जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए.
No, what Apple says or what Apple does not say is not the main concern. The fact is that the right to privacy in this country is breached by the government. The government agencies, not now, since long, are trying to peep into the privacy of individuals of this country. Today the news came out from the medical records, crores of people's details are now on the public market for sale. So this is India today. The government talks a lot about privacy, right to privacy. They say about bringing an act for that. All these are on the air. Apple does not say even in this statement because Apple may be compelled by many people. I don't know who they are to retreat from their statements. Whatever they say even now, they never say that such a breach is not taking place. They never say like that. ये इसे आरोप क्यों कह रहे हैं? मैसेज अलर्ट आ चुका है, सरकार न कहे ये अलर्ट गलत है। अखिलेश जी का भी नाम है, महुआ जी का है, प्रियंका जी का है, सीताराम येचूरी का है, शशि थरूर का है, राहुल जी की टीम में लोगों का है। मतलब ये हो क्या रहा है? डिजिटल दुनिया बना रहे हैं और पर इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत अब देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा। पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है क्या? सीधी सी बात है। सरकार की ओर से अभी तक कुछ सुना ही नहीं मैंने। उनकी ओर से सफाई आनी चाहिए ना। इसका एक मंत्रालय भी है, वो क्या कर रहा? एप्पल की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और अपनी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर उन्होंने अपनी सरकार से भी साझा करने से मना कर दिया। ये लेवल है एप्पल की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का। अगर एप्पल जैसी दुनिया की सबसे विश्वसनीय कंपनी ये कहती है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक मतलब सरकार द्वारा प्रायोजित आपके फ़ोन की जासूसी की जा रही है, इससे बड़ी शर्म की बात किसी सरकार के लिए क्या हो सकती है? और क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा कि मेरी जासूसी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी की जा रही है। क्यों जासूसी की जा रही है? ऐसा क्या डर है केंद्र सरकार को कि अब विपक्ष की एक एक स्ट्रेटजी केंद्र सरकार उनके फ़ोन के ज़रिए जानना चाहती है? ये तो बहुत शर्म की बात है। इस तरीके का स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग मैं समझता हूँ पूरे विश्व में किसी लोकतांत्रिक देश में हमने नहीं सुना। अगर एक आदमी के फ़ोन पे जासूसी हो जाए तो अमेरिका जैसे देशों के अंदर तो सरकार गिर जाए, राष्ट्रपति को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ जाए। और ये आरोप कोई पहली बार नहीं लग रहा है। पहले भी पेगासस का आरोप इस सरकार पर लगा है कि इन्होंने इजरायली कंपनी से एक सॉफ्टवेयर खरीदा जिससे इन्होंने बड़े बड़े अफसरों की, पत्रकारों की और नेताओं की जासूसी की। ये बड़ी गंभीर बात है। ये एक ईमेल आया कल रात को एप्पल से ही, और वो उन्होंने वहाँ पे सूचना दी हमें कि आपके सरकारी एजेंसीज के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, स्टेट स्पॉन्सर्ड आपके सर्वेलेंस हो रही है, आपका फ़ोन और आपके पूरे सिस्टम्स जितने भी आपके ये है वो सब जो है हैक किए जा रहे हैं ऑफिशियली। और ऑफिशियल यंत्रों को मतलब इसको टैकल करना बड़ी ज़्यादा मुश्किल है ऑर्डिनरी हैकर्स। अब ये नौबत क्यों आई मोदी सरकार को हमारे ऊपर भी जासूसी करें? और जासूसी नहीं, ये एक मौलिक अधिकार है हर नागरिक का, यहाँ पर उसकी प्राइवेसी के लिए। ये हमारे देश की संविधान कहता है, हमारा देश के मौलिक अधिकारों पे ये एक बहुत बड़ा हमला। ये हम समझते हैं कि जनतंत्र पर, अपने इंडिविजुअल राइट्स की बात छोड़िए, जनतंत्र पे ही ये एक बहुत बड़ा हमला है कि इस तरीके की सर्वेलेंस, इस तरीके की जासूसी जो सरकार खुद करवा रही है विपक्षी नेताओं के ऊपर, ये और पत्रकारों के ऊपर, विपक्षी नेताओं के ऊपर, ये हम समझते हैं कि हमारी जनतंत्र का सर्वनाश करने का रास्ता है।